Hi guys, welcome back to my channel. I am Priya and today is going to be a birthday vlog. So it's my birthday and here's my mom doing some gardening. Happy birthday to you, dear Priya. She's so cute. I love her. Well, to be honest, she doesn't need to wish me again and again because she has already wished me last night and she wished me this morning. She came in with like a little with a plate and there was diya in it and she gave me lots of blessings, so I don't think she needs to wish me again and again. So did my brothers and they're upstairs. So outfit guy, it's nothing too special, it's just very simple plain white dress. To be honest, I don't have anywhere to go. I'm just probably gonna go out with my brother to just get my cake and yeah. As all of you know how obsessed I am with taking photos. So I have forced my brother to do a photo shoot for me. And if you're wondering why am I wobbling, so I don't really know how to wear heels and I am going to wear heels with my dress so I can get good pictures. देख रहे हो गाइज, ये कितनी इजी हील्स हैं और मुझसे ये भी नहीं पहनी जा रही हैं. लाइक मुझे ये भी पहननी बहुत हार्ड लग रही है. तो यहाँ मैं आई थी फ़ोटोज़ लेने, पर मेरा भाई अब उसको लटकने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है. उसको लग नहीं रहा है कि यार डोंट बुली मी मैन. ये आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा पूरा हक है कि मैं तुझे बुली भी करूँ, सब कुछ करूँ. तू होता कौन है ना कहने वाला. He's hanging upside down. I have no idea. उतर जा बंदर, क्यों लटक रहा है, किस खुशी में लटक रहा है. आई थिंक ये मेरे बर्थडे की इसको इतनी खुशी है कि ये पागल होके उल्टा लटक रहा है. ऐसी बात है ना ऋतिक, ऐसी ही बात है ना. ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. अभी फोटो शूट करके आई हूँ. घूमने जा. ये भी झुमका पहनेगी? हाँ फैशन है मम्मी, इसको फैशन बोलते हैं. एक कान में झुमका, एक कान में झुमका नहीं. यही फैशन होता है. अब दो झुमके पहन ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खो जाए किसी का एक झुमका. सच में उसको फैशन बना सकते हैं. एक झुमका पहना हुआ आपने तो मतलब आपका फैशन पूरा हो रहा है. मम्मी जो मैंने आपको फोटो दिखाया, आपको मेरे बाल कैसे लगे उसमें? मैं आपको कैसे लगे वो बाल? मतलब नाइस. झूठ मत बोलो, अभी तो आप बोल रही थी पेड़ की जड़ जैसे लग रहे हैं. मम्मी बोल रही है कि जो मैंने फोटो ली है उसमें जो मेरे बाल हैं, क्योंकि इनका कलर ऐसा है, उस वजह से मम्मी कह रही है कि मेरे जो बाल है वो पेड़ों की जड़ लग रहे हैं. सो बेसिकली ऑन एज माई बर्थडे डिनर आई थिंक दे आर मेकिंग मक्का की रोटी. मतलब मक्के की रोटी, कॉर्नफ्लावर. मक्के की रोटी खाई जा रही है आज, वो भी गोभी की सब्जी के साथ. अच्छी लग रही है आपको? वेरी नाइस. Why my makeup is looking a bit grey right now, even though the foundation itself is a bit darker shade. Does my eyelashes look like spider legs? What do you guys think? Tell me in the comment below if you think they look like spider legs. Oh my god. No, social distance. Social distancing. There's something in there, so be careful. Oh, thank you. Thank you so much. I really appreciate this. My mom. कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ. मम्मी डैडी आए आज आपने. So I've just come outside guys and I'm going to go and get my cake. My dad's gone in the shop in the Tesco to get some pizza ingredients because you'll be watching him cook today and he'll be making handmade pizza. So I'm very excited. So I've just got my cake guys and I've put it in the boot
And now I'm just going to wait for my dad, or actually I might go inside the shop and look for him. Honest, it was really busy, like it was unexpected. It was really busy in the shop as well. I was a little bit shocked, like how many people were born on 20th of August. Thought I was the only one. No, of course not. So I tried calling my dad and he hasn't picked up. I can't find him. I think I will go back in the car and wait for him because it is a big store. So I am back inside because it's a big store, guys, and it's going to be really hard to find my dad in there, and he hasn't answered the phone. So I think I'm just going to wait for him here. It's not worth going around. And don't forget to hand sanitize because COVID. Finally पिज्जा बन गया है. पापा जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है. Wow, that looks yummy. Very, very good. I'm so hungry. Can't wait. पिज्जा बाहर से ऑर्डर कर सकते थे, तो आपने इतनी मेहनत क्यों की घर में? जो हमारा फ्रेश पिज्जा होता है उसका खाने का कुछ अलग ही आनंद आता है. ये बात तो सच कही आपने. और जो शॉप वाला होता है वो फ्रेश होता है, बट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि होममेड पिज़्ज़ा सबसे बेस्ट होता है. So अब टाइम है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं. Wow, it looks so good, so delicious. It looks good. बहुत अच्छा बनाया पिज़्ज़ा आपने पापा जी. थैंक यू. आप क्यों थैंक यू बोल रही हो? बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनाया है. 1, 2, 3 go. Cheers. So basically it was so windy. This fell off the table and now it's broken. मेरे को पता ही नहीं लगा. मैं खड़े होके फोटो खींच रही थी और हवा चलने लगी एकदम से. और गिर गई. जिस दिन मेरा जन्मदिन है उस दिन इसका मरण दिन था. आज का दिन इसका आखिरी दिन था, मैं इसलिए टूट गया. एक फ्लावर का वो तोड़कर जो उसमें से निकला है, मैंने उसको यहाँ ऐसे लगा दिया है. तो आई थिंक इट लुक्स बेटर. इसका क्या करूँ? इसको ऐसे लगा लेती हूँ, शायद अच्छा लगेगा, शायद नहीं भी अच्छा लगेगा. That's learning with him. So the only one who's not that talented is probably me, because I can't do either of those things. Have you seen like someone, you know, it's their birthday and they take their own cake outside? Yeah, that's me. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? Nobody asked me to do it, but I'm just doing it for myself. This isn't staying because it's so windy. Feeding each other. To me. That's so sweet. Thank you. She did not force any of us. You have anything to say? Yeah, I just want to say
इतनी खुशी मुझे आज तक I love you all and thank you so much. I'm so happy I have a beautiful family. Thank you very much. Thank you, Mummy Papa. God bless you, my daughter. ये बिल्कुल अपना देसी वाला हिसाब किताब है। लेके आए पड़ोसी को। भारत में है, चाहे आप भारत में हैं, चाहे आप मैनचेस्टर में हैं, असली जो ट्रेंड्स हैं अपने वो कभी नहीं जाएंगे। So instead of saying happy birthday, Karthik sent me an Instagram message, HB and a laughing emoji. HB. That's me, I did it. That's me, I did it. Why did you do that? Like, you can literally just say happy birthday to me and you can hug me. HP. HB. दे आए आप पड़ोसियों को केक, उन्होंने कुछ बोला? Reality. उन्होंने थैंक यू बोला? I'm so tired now. You have taken enough pictures. I have done enough of vlogging today. I'm sorry guys, I'm not really good at this. Like, I'm still new to all of this. I'm जैसे still बॉडी बिल्डर learning. पोज करते हैं वैसे ही ये फोटो के पोज करती है। कितना फालतू बोलता है ये। इसकी बात को सीरियसली मत लेना तुम लोग। ये सिर्फ बकवास करने में माहिर है। तुम लोग थे 4 व्यूअर्स, they wanna get hurt. They and their sentiments. अरे यार बहन को सपोर्ट तो दिखा, तभी तो 4 से वो 4 मिलियन भूल जाए, ये 4 दिन की एक्टिंग है, उसके बाद नहीं आएगा व्लॉग कभी। नहीं। अगर लोग मुझे बताएंगे उनको पसंद आ रहा है काम मेरा, तो मैं डेफिनेटली डालूंगी। प्लेजरिज्म, जो पापा जी ने लिखा है कार्ड पे, आप उसको एग्जैक्टली कॉपी करके वहां पे लिख दो नीचे, सही रहेगा। ये मम्मी आप ओरिजिनली कुछ लिखोगी अपना। ज्यादा प्रेशर हो रहा है। चलो मैं आपको अकेला So I've just changed. I've come from downstairs. I was with my family. I was spending some time, that quality time with my family. We were just sitting down and chatting away, and it was just so nice. I really appreciate my family. I really do. Like, I had such a good day at home. I'm still not going outside anywhere, so we just, did everything at home, and it was amazing. It was beautiful. We don't usually do this, when we have that opportunity to go outside. I'm trying to stay in as much as possible, and I just had a very good and a simple day with my family, and I really appreciate it. And thank you very much to every single of you who wished me today. You guys really did make my day. And I'm really tired now, so I'm just going to take off my makeup and I'm going to jump in my bed. But thank you so much for watching this vlog, and please do like, subscribe, comment and share, and let me know how did you find this vlog. And until then, take care. I'll see you next time. Bye.